स्वागत है आपका थर्ड एपिसोड में। थैंक यू। पिछले 2 सक्सेसफुल एपिसोड्स में हम जेंडर रोल्स और पेरेंटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो मैंने तो बताया, क्या बताया था मैंने कल? कि पेरेंटिंग पेरेंटिंग एक चाइल्ड के ग्रोथ को कैसे मोल्ड कर सकता है, मोल्ड कर कैसे। सकता है, हाँ, कैसे अफेक्ट कर सकता है। हाँ। और कुछ सजेशंस मैं दूंगी बिकॉज आई विल ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट. If I'm agreeing or disagreeing, it is because I foresee something happening as a result of what we do today. So that's why this happens. Anyway, जब मैं ये बात कर रही थी इसके बारे में तो मैंने सडनली सोचा कि मतलब तुम तो सिंगल चाइल्ड हो, है ना? यस इंडीड। तो कोई सिबलिंग विबलिंग तो है नहीं, तो अम्मा पापा ने पूरा प्यार तुम पे ही बरसाया होगा। ओ सावन बरसा है। तो बताओ थोड़ा कि कैसा लाइक गया माय तुम्हारा एक्सपीरियंस। बचपन? हाँ, हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू फील एज अ सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स मस्ट डू और would help or benefit them in some way or the child as well? क्या लगता है? चलो इतना आई कैन प्राउडली से, जिस दिन हम पैदा हुए थे, एट दैट टाइम ही डिडंट गिव मी अ टाइटल दैट माय सन वुड बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, लाइक अ वाइट कॉलर जॉब बेसिकली. एंड इन माई एक्सपीरियंस मेरे को गलती करने की अपॉर्चुनिटी बहुत दी थी. एंड जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मतलब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, तो मतलब एज के हिसाब से मतलब कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, उसके लिए भी मेरे को डिसीजन बनाने का टाइम दिया था. बट जहाँ पे मैं डिसीजन नहीं बना पाता था, एट दैट टाइम दे यूज टू come into the game and make a decision for myself. And कभी मारा नहीं, हर चीज़ प्यार से समझाया. हाँ, ओनली कभी ज़िद्दी हो जाते थे तब थोड़ा सा हल्का सा एक चिन पे, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. एंड मेरे को पढ़ाई मतलब बाय हार्ट करके नेवर, ओनली खेल कूद. पढ़ाई भी मतलब हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तुमको कैसे समझ में आ रहा है तुम्हारा नॉर्मल स्टडीज़, यू डू इट इन दैट वे. इफ़ यू थिंक यू आर कन्फ्यूज, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट विथ योर टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स भी अगर तुमको एक्सप्लेन करते हैं तो जस्ट गो अहेड एंड आस्क देम. एंड वैसे ही पूरा बचपन निकला है, मस्ती वस्ती भी इक्वली की है हमने. एंड हाँ, ड्यूरिंग टीनेज जब adolescence hit हुआ, at that time I was struggling a lot with my thinking, my growth, personal growth, and complete blur. मतलब मेरे को पता नहीं है what I will do in future. And at that time also my parents never pressurized कि तुमको यही करना चाहिए, this would be good for you, you can have a good life, you will have a good standard of living, and you have to get married at the age of 27, then have a family. No, nothing like that. उन्होंने बोला this is the age to experiment. This is what my dad said. You just do whatever you like. And मैं वही करता रहा. मेरे को even after 10, like when people say now you have to decide whether you have to take science or commerce or arts, हाँ, उस टाइम पे आई वुड से कि माई फादर वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई चोज कॉमर्स ओवर साइंस. बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज जहाँ पे मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ है और जहाँ से मैं आया हूँ, माई अपब्रिंगिंग वॉज टोटली गुड, नथिंग बैड, नो कंप्लेंट्स एट ऑल. बट जो मेरा सराउंडिंग है, हमारा मतलब बहुत स्ट्रगलिंग था. सो आई अंडरस्टैंड द डिसीजन ऑल्सो कि मतलब मैं ऐसा स्ट्रगल ना करूँ. दैट्स वाई ही आस्क्ड मी टू चूज साइंस एंड एटलीस्ट मेंटेन अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बट उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया, उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था. आई डिडंट टॉक टू देम फॉर अ वीक और टू. एंड
बहुत रफली बिहेव किया. आई वॉज अ टोटल रिबेल. मतलब कोई भी अगर दूसरा पेरेंट होता तो वो मार धाड़ के अपने बच्चे को समझाता, बट दे डिडंट. वो फिर भी मेरे को दे गेव मी सम टाइम टू एडजस्ट. देन आफ्टर वन पॉइंट जब व्हेन आई joined my when I had my first job, उस टाइम पे आई रियलाइज कि वॉट दे वर ट्राइंग टू से वॉज ट्रू. बिकॉज मैं विदाउट एनी थिंकिंग आई वॉज सेइंग टू माई डैड कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, VFX में जाने दो. बट आई डेंट हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट द टाइम. मतलब आई कैन नॉट डिपेंड ऑन माई फादर द होल टाइम. सो वो नीड मेरे को समझ में आया. सो आई अंडरस्टैंड बिकॉज ही स्टिल वॉन्ट्स मी टू डू वॉट आई लाइक, but he wants to create a financial stability so that I don't sacrifice on my certain standard of living, as you said earlier. तो वो मेरे को realize हुआ. तो I started focusing on finances, and during COVID time, it was a sad time for many of them, but for me it was a learning phase. So I experimented as usual. जैसे मैं पला बड़ा हुआ हूँ, I experimented with a lot of things, like how I can sort my finances, what to do, do I have another interest which I would like to pursue. Then finances पे आया, I got into trading, into investing, and curiosity बढ़ती गई. And then वहाँ से मैं सीखा, I experimented, I invested my time into it, my certain amount of my parents' money as well as my pocket money. And वहाँ से सीख के मैं आज के टाइम पे बोल सकता हूँ कि now I believe that in some time I can achieve that financial stability and do whatever I want to do in my life, whether it's a filmmaking, whether it's a business, or traveling, or be a travel writer, something like that. I can do whatever I want to do. So now I understand why my parents were like that, कि मतलब उस टाइम पे जो crucial part था, why they had to step in. And now I understand. He still wants me to pursue what I like. So I would say कि मतलब as a single child, I got all the love they showed to the child, but at the same time gave me enough space to experiment, make mistakes, learn from your mistakes, and grow by yourself, be independent. And हाँ, तो अच्छा लगता है मतलब जब वो लोग they don't discount your opinion or your idea. बहुत लोगों के लिए होगा कि they might have complained that they have generational gap, because of that they don't communicate. But from my personal experience, I would proudly say that from both the sides efforts were made. लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है. There are people around me who say कि मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, तुम्हारे पापा तो बहुत चिल है, तुम्हारी मॉम भी बहुत चिल है. तो लोगों को लगता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, बट इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड. इट्स लाइक हम दोनों ने मतलब माई मॉम, डैड एंड माई सेल्फ, हम दोनों ने मतलब एफर्ट डाला है जिससे कि वो कम्युनिकेशन गैप कम रहे. एंड दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स. Like my dad is my best friend, male best friend, and my mom is my female best friend. So that was the beginning of a healthy relationship for a child. So आज भी whenever I think whenever I get confused or whenever my judgments are clouded, sometimes I take actions and then उसका effect होता है. Sometimes I'm wrong, sometimes I'm right. But the value that I got over the period of time, कि मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है what mistakes I made. So it is adding to my, as I grow older, तो मैं और भी वाइज बन जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि because I am able to catch what mistake I made and what I should not do the next time if it happens again. So that's the best part. Do you believe that this is a result of the parenting you experienced? Yes,
definitely. Okay. And the understanding from the parent side कि मतलब जो करना है करने दो, ऐसा नहीं है कि सोसाइटल प्रेशर पे जस्ट बिकॉज मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ. आई वॉज इन LKG और अपर KG. वहाँ पे मतलब टीचर ने एक दिन डैड को बुलाया एंड मॉम सेम स्कूल में ही थी, तो बुला के बिठाया. टीचर ने बोला यू शुड फोकस ऑन योर चाइल्ड्स फ्यूचर. तो मेरे डैड एक छोटा सा स्माइल दिए. वो बोलते हैं व्हाट हैपेंड. तो वो बोलते हैं कभी किसी स्टूडेंट को देखा है LKG अपर KG फेल होते हुए. एंड माई डैड वाओ. सो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप फॉर अ चाइल्ड. सो आज भी whenever I think कि अभी whenever I get confused or whenever my judgments are clouded, sometimes I take actions and then उसका effect होता है. Sometimes I'm wrong, sometimes I'm right. But you know the value that I got over the period of time कि मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है what mistakes I made. So it is adding to my as I grow older, तो मैं और भी वाइज बन जाऊँगा क्योंकि मेरे को पता चलता है कि बिकॉज आई एम एबल टू कैच वॉट मिस्टेक आई मेड एंड वॉट आई शुड नॉट डू द नेक्स्ट टाइम इफ इट हैपन्स अगेन. So that's the best part. Do you believe that this is a result of the parenting you experienced? Yes, definitely. Okay. And the understanding from the parent side कि मतलब जो करना है करने दो, ऐसा नहीं है कि सोसाइटल प्रेशर पे जस्ट बिकॉज मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ. आई वॉज इन LKG और अपर KG. वहाँ पे मतलब टीचर ने एक दिन डैड को बुलाया एंड मॉम सेम स्कूल में ही थी, तो बुला के बिठाया. टीचर ने बोला यू शुड फोकस ऑन योर चाइल्ड्स फ्यूचर. तो मेरे डैड एक छोटा सा स्माइल दिए. वो बोलते हैं व्हाट हैपेंड. तो वो बोलते हैं कभी किसी स्टूडेंट को देखा है LKG अपर KG फेल होते हुए. एंड माई डैड वाओ. डाटा नहीं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट मी. डिडंट सेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं. घर आने के बाद भी नथिंग. बस एक चीज़ मेरे को बोला पापा ने कि बेटा जो करना है कर, जैसे करना है कर. आई नो कि तुम कैसे हो. यू आर माई सन. आई नो वॉट यू आर केपेबल ऑफ, वॉट यू आर नॉट केपेबल ऑफ. एंड इट्स टू अर्ली फॉर द टीचर टू से कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे चाइल्ड का फ्यूचर रिस्क पे है. टेंशन नहीं लेना इतना. मेरे को पता है व्हेन द टाइम कम्स यू विल डू वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ हो गया विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई फैमिली. तो वो अंडरस्टैंड करने का भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि मतलब तुम खुद से सीखो. एंड अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो कि मैं तुमसे कुछ सीख सकता हूँ, ही इज़ एन ओपन बुक. वो बोलते हैं तुम मेरे को सिखाओ, तुम मेरे को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताओ, मेरे को ज़ीरो आइडिया है. सो नाउ माई फैमिली इज़ इनटू इन्वेस्टिंग rather than trading. So that's the best part कि मतलब दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. So yeah, parenting is I believe this is a very good parenting. And मैं भगवान से यही बोलूँगा कि सबको अगर ऐसे एक पेरेंट मिल गए बहुत अच्छा रहेगा. I think you are living proof of the result one could expect if certain points are kept in mind and given that the child is your own. You open up avenues for the child to explore. So yeah, I think that's pretty. I mean, I don't have to give an example anymore, right? Yeah. I mean, people might think so far कि मैं थियोरी में बोल रही हूँ या ऐसे से बोल रही हूँ, राइट. हाँ, कुछ तो मेरा क्वालिफिकेशन है नहीं भाई. मतलब मैंने तो बस पढ़ के ही मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है. But what I have seen personally, मतलब
जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उसमें से आई हैव नोटिस्ड वन थिंग इन few पेरेंट्स कि दे हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ तुम्हारा बच्चा सेफ फील करे ओपन अप होने के लिए. एंड व्हेन दैट चाइल्ड फील्स दैट सेफ स्पेस ना, तब तुम देखो कि वो तुम्हारे साथ कितनी बातें शेयर करता है. he will talk everything, whatever happens in his life, bad, happy, sad, depressed, everything. और फिर तुम देखो कि योर बॉन्डिंग विथ योर चाइल्ड कितना ड्रास्टिकली चेंज होता है. सो दैट वन थिंग मैं मतलब मेरे से जो छोटे हैं उनके उम्र के मतलब उनके पेरेंट्स को अगर मैं देखता हूँ वो नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे. लाइक बहुत कम लोग हैं ऐसे जो करते हैं अभी. तो आई वुड से कि वो एक चीज़ मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो ऑफेंस, बट वो देखना पसंद करूँगा कि यू नो व्हेन दे हैव अ चाइल्ड, व्हेन अ कपल डिसाइड्स टू हैव अ चाइल्ड, दे मेक श्योर कि वो एक टाइम एट वन पॉइंट दे क्रिएट अ स्पेस फॉर देयर चाइल्ड. मतलब वो स्लोली होगा. मतलब बेसिकली द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इन मस्ट बी सेफ, राइट? बाहर जाके बच्चा क्या एडवेंचर करेगा ये तो हमको नहीं मालूम है. But while it is at home, it feels safe enough to communicate and tell what they feel, what they don't, what is. A lot of children, they don't have the right to be angry, right? The moment the child shows anger, एक लगेगा गुस्सा करेगा तो. बच्चे लोग बिल्कुल सोडा की बोतल की तरह होते हैं. कुछ कुछ फीलिंग्स होती है जो वो निकालना चाहते हैं बाहर. मतलब जैसे ही हल्का से उनको वो गैप मिल जाता है वो निकल लेते हैं. यू नो कभी कभार वो उनके लिए खराब साबित होता है, कभी कभार अच्छा भी होता Once है. in a while it's all right, but we must also look. I mean, if parents are looking at this, they must also analyze whether the child's outburst is justified or not. If there is a proper reason behind it. बिल्कुल. अगर हमारी गलती है as parents तो हमको उसको मतलब acknowledge करके We have to accept हाँ, it. rather than saying कि नहीं I am the parent so I am the boss so I don't have to. You can't blame it on your kid. Yeah, no, I don't have to agree to anything. I don't have to own up to anything. You know, that kind of behavior when parents, they have this superiority that they show towards the children is unhealthy. You are fine that to some extent you will have to show who's the boss. That's fine. But being bossy All the time is not is good. kind of not fair on children. So, because they turn out to be angry people for a long time. You know, people say the hormones are responsible for changes in the mood shifts and swings. But if they have been what do you call it, harnessing anger, okay, within themselves because they don't have the right to show their emotions, and they do notice that there are times when they have shown anger which was justified but their parents refuse to, you know, acknowledge it, look into it rather. So when they are teenagers, these emotions, this sense of independence, all of that put together, you know, it creates a huge mess. And honestly, I do feel, I think this is applicable to you as well, that people who are who learn early master it later as adults, right? Somebody who has, for example, seen business because his father was a businessman, he would have the tendency of becoming a better businessman. Yeah, maybe he can surpass his own father. That's what parents always want, right? Parents seem to always wish that their kids surpass them. But this should be done in a proper surrounding, safe surrounding, like Yeah, not I mean, because see, of the societal pressure. that must be considered, you know, in the pursuit of getting acceptance from the society. Parents are squandering their children's future. And best part is that
parents and child both have to evolve over the period of time. Absolutely. Because if I decide to have a child, so I don't know how the generation will be in the future, but I have to understand how I have to deal with my child as he grows, Right. as he or she grows. Correct. So जैसे अभी if like when my child turns 18, so शायद थोड़ा बहुत alcohol introduce होगा. I would like my child to, dad, let's go and have a pint of beer. So I want to create a safe space जिससे कि वो ऐसा ना हो कि मतलब वो बाहर जाके मतलब कुछ उसके लिए वो हो जाए मतलब. No, बहुत right? Yeah. I mean, if you give Mm. your child what it expects, sometimes they would want more from you, and they would like to bond with you better, right? And maybe you both can learn a thing or two from each other, Absolutely. because human mind. One does not become a mother or a father when the child is born. It's the process Yeah, that makes them parents. everlasting bond that you create. So yeah,